Good morning, students. This video session is for class 2nd students. Subject Reasoning. Chapter number 13. Number series 2. This is our lecture number 13. So, first one is number series 2. What do you mean by number series, beta? Number series questions are based on numerical sequences that follow a logical rule or pattern based on elementary arithmetic concepts. बेटा ये जो नंबर सीरीज क्वेश्चंस हैं ये नंबर्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, और जिसके अंदर हम अपने मैथ्स के कुछ लॉजिकल रूल्स फॉलो करते हैं या पैटर्न फॉलो करते हैं. ओके, a particular series is given from which the pattern must be analyzed. एक हमें जो सीरीज गिवन होती है बेटा उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा पैटर्न हम यूज कर रहे हैं उस क्वेश्चन में. You are then asked to predict the next number in the sequence following the same rule. और जो हमने यहाँ पर सीरीज में देखा कि कौन सा पैटर्न उसमें यूज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, ये अंदाजा लगाते हैं कि नेक्स्ट नंबर हमारे सीक्वेंस में कौन सा होगा, सेम रूल फॉलो करते हुए. अंडरस्टूड बेटा? नाउ जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस asked from the number series. Okay, and here we are going to study the first one. तो बेटा यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज के. तो आज हम फर्स्ट वन स्टडी करने जा रहे हैं एंड दैट इज अ न्यूमेरिकल सीरीज इज गिवन इन विच अ नंबर इज रॉन्गली प्लेस्ड. क्या मतलब है इसका कि हमें एक न्यूमेरिकल सीरीज दी होंगी जिसमें एक नंबर गलत दिया होगा. ओके, एंड यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर रॉन्ग नंबर, और हमें ये पता करना है कि वो रॉन्ग नंबर कौन सा है. ओके, इट मे बी बेस्ड ऑन ऑड और इवन नंबर्स. वो जो रॉन्ग हमें बताना है वो बेस्ड किस पे बेस्ड हो सकता है, या तो वो ऑड और इवन नंबर्स पे बेस्ड हो सकता है. इट मे बी बेस्ड ऑन द टेबल ऑफ any number. Okay, and it may be based on the same difference of numbers. ठीक है, तो ये 3 तरह के हम आज स्टडी करेंगे. ओके, so in example number 1 it is given 2, 4, 10, 15 and 16. so बेटा if we are talking about the difference, अगर हम डिफरेंस देखें तो 2 और 4 के बीच का डिफरेंस है 2, 4 और 6 का डिफरेंस है 6, 10 और 15 का डिफरेंस है 5 एंड 15 और 16 का डिफरेंस है 1. इट मीन्स वी हैव नॉट सेम डिफरेंस. ओके, सो व्हाट इज दिस? आवर ऑप्शंस आर A 4, B 10, C 15 and D 16. But you can see that these all numbers are even numbers, 2, 4, 10 and 16, but 15 is odd number. So here we can say that the answer is 15, that is wrongly placed here. Okay, 15 की जगह यहाँ पर कोई भी और even number आ सकता था like 12, 14. Okay, so today's homework questions are in question number 1, 5, 15, 24, 30. In question number 2, 3, 6, 9, 11, 15, 18, and we have given options. We have to find out which one is wrongly placed. In question number 3, 5, 9, 11, 23, 24. In question number 4, 2, 4, 6, 7, 12. And in question number 5, 6, 12, 18, 24, 31, 36. Okay, beta, you have to do these questions which are based on even or odd numbers or either tables. Okay. Now the homework solution of chapter number 12, jumbled words, lecture number 12.
So I had given you sums based on these jumbled words. So let's see, in question number 1, it is given TCOA and we have to make a meaningful word from it, and that is coat. 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 Okay. Now in question number 2, it is given BARIN and this is not a meaningful word. So we have to make a meaningful word from it, and that is brain. 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 Because we have to use all these letters. Okay. Now in question number 3, OGRNAS, and we have to make meaningful word, and that is organs. 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 Now the next is FENRID. So here we have to make the word that is meaningful, and the word is friend. 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 This is the correct spelling of friend. FRIEND. Now the question number 5, GOUNRD. So here we will make meaningful word, and that is ground. 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 Thank you.